लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका फिर से AMD स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम पे। गेमिंग पार्टनर लॉजिटेक जी, ब्रॉडकास्ट पार्टनर लोको, मेरा नाम है कैप्टन एंड मेरे साथ ड्रेस पे जुड़ रहे स्पीरो। ग्रैंड फाइनल्स डे 1 के साथ साथ एंड आज हमारे साथ चार बहुत ही होनहार एंड पॉपुलर, आप कह सकते हैं वेरी वेरी पॉपुलर इनफैक्ट पर्सनालिटीज जुड़ते हुए नजर आएंगे। वेल, वी हैव फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग the owner of Enigma, that's going to be Mr. Aryan. We have Sentinel Anna from Velocity Gaming. We also have Mayavi from Team Mayavi, and we have Santosh sir from Team 7Sea Esports. Well, first of all, thank you guys for joining us. And मायावी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा यहाँ पे। मायावी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम फाइनल्स तक यहाँ पे पहुंच चुकी है। एक सवाल हर कोई जानना चाहता है, आप इतने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं? आप कास्टिंग भी कर चुके हैं, आप एनालाइज भी कर चुके हैं टीम्स को, आप कोचिंग भी करते हैं, नाउ यू आर अ टीम ओनर। हाउ डज इट फील एंड हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक मायावी अभी हमें सुन नहीं पा रहे कैप्टन, बट मैं ज़रूर उनसे पूछना दोबारा चाहूँगा। मायावी, कैन यू हियर अस? Not actually, Naveen. Okay. ओके, मायावी कांट हियर अस। वेल, कोई बात नहीं, मैं आर्यमन सर से यहाँ पे बात करना चाहूंगा। आर्यमन सर, आपकी टीम पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक्चुअली लेट मी रिफ्रेज माई सेल्फ, आपकी टीम्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं पिछले कुछ दिनों में। तो एज द प्राउड ओनर ऑफ एनिग्मा गेमिंग, हाउ आर यू फीलिंग? It obviously feels great. We've been working towards this vision for a few months. A few years actually. Players working very hard, the management working very hard. So it feels good to finally see that, being the fruit of all the effort that's being put in behind the scenes, and hoping that this is just the beginning and we're going to go a lot further from here. Hopefully, we can keep this up and keep up the consistency in with both our teams moving forward. Well, that's just amazing. And इसी के साथ साथ my second question to you is going to be, well, the chances of winning a BGMI tournament is really, really close for Enigma Gaming. So, can we see that happen in Grand Slam? With the effort is all going to be there. We're going to try our best. You're also going to see some surprises in the team, and hoping for the best. We're going to try and go win that title. वेल, मायावी से मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। मायावी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम फाइनल्स तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप कास्टर भी हैं, आप एनालाइज भी करते हैं टीम्स को, आप कोचिंग भी करते हैं, अब आप एक ओनर भी हैं टीम के। तो आप कैसे मैनेज करते हैं एंड हाउ आर यू फीलिंग? देखिए, एक टाइम पे एक काम किया जा सकता है। बहुत से लोग इस चीज का भी मैसेज किया कर रहे थे कि आप कास्टिंग में कब वापसी करेंगे। तो डेस्क के उस साइड का एक्सपीरियंस मैंने कर लिया ऑलरेडी। लाइफ में हर तरीके के एक्सपीरियंस होने चाहिए, तो अब डेस्क के इस साइड का एक्सपीरियंस भी मुझे एक बार करना था। एक टीम बनाई थी राइजिंग स्टार्स की, जैसा हम हमेशा डेस्क के उस पार से स्काउट किया करते थे, एंड कुछ अच्छे प्लेयर्स को ढूंढ के एक लाइनअप बनाई, पूरी जी जान से मेहनत करी, एंड इस बार क्वालिफाई करना था। बहुत ट्राई हार्ड किया था। Lobby was way too tough, competition was way too high, but quarters, then semis, and now we are in the finals and looking forward to it. Let's win it. Well, that's just amazing. मैं इसी के साथ साथ मेरा अगला सवाल आपके लिए रहने वाला है कि अभी कंपटीशन लेवल आपने कहा बढ़ रहा है, इनफैक्ट इट्स इंक्रीजिंग टू अ हेल अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, एंड इसी के साथ साथ क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स में वी डिड सी अ सिमिलर अप्रोच फ्रॉम योर टीम कि पहले कुछ दिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे थे, बट देन एंड देयर कमबैक आया, एंड अभी ग्रैंड फाइनल्स में what is your preparation on that basis, and especially with all of these amazing teams performing? देखिए कैप्टन, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वो पेंसिल से पेन पे स्विच करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है स्टेबलाइज होने में। आई थिंक इससे बेहतर एग्जांपल नहीं रहेगा किसी भी एक अंडरडॉग प्लेयर के लिए जब वो डायरेक्ट T1 कम्युनिटी के टीम्स के साथ कम्पीट करते हैं। तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टेबलाइज होने का टाइम चाहिए था, बट आई एम रियली प्राउड कि मेरे प्लेयर्स ने बहुत जल्दी उस चीज को समझ लिया, अडाप्ट कर लिया, एंड जैसे कि आपने बताया कि कमबैक हमारी हमेशा लास्ट के फेजेस में ही आई है। इस बार शायद हम स्टार्टिंग से डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ग्रैंड फाइनल्स में। वेल, दैट वुड बी फन। मैं अन्ना से पूछना चाहूंगा। अन्ना, आप बीजीएमआई कम्युनिटी में बहुत समय से हैं, आपकी टीम भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आई है। आपसे पूछना चाहूंगा, अभी अभी थोड़े से लाइनअप चेंजेस हुए हैं, लाइनअप चेंजेस के बाद स्नैक्स अब टीम में का हिस्सा नहीं है, टीम कैसे कोप कर रही है, और क्या अब जो नई टीम आई है, कोई नया प्लेयर आया, तो सिनर्जी कैसे चल रही है अभी टीम की? Thank you, Spero. Thank you, Captain, for this wonderful opportunity. Good to see you guys again at the desk. Coming to the team part, it has been a little rough ride, I would say, from BGIS stage. I've taken a team in the month of December, so it's just been a couple of months. Even I'm studying them. Been assisted by my cousin who is currently looking after the BGMI lineup personally. So yeah, this is I think a stage where we would experiment whatever we want to do. Synergy wise, it is good.
But in terms of the gameplay, in terms of the adaptation that all these strong teams are showing us right now in India, it would be a little uphill task, I would say. But team is prepared for this Grand Slam, and we are ready to go. दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके साथ साथ अन्ना, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये रहने वाला है कि देयर इज अ टीम हु आर नोन एज टीम नगेट्स एंड वो क्वालिफायर से अकेली टीम अभी बची हुई है। वेल, दे आर नो लॉन्गर राइजिंग स्टार्स, दे आर स्टार्स बिकॉज वो ग्रैंड फाइनल्स तक का जो सफर है दे हैव सक्सेसफुली अचीव्ड इट। एंड बिसाइड्स दैट, अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक एनी टीम यू वुड हैव देम ऑन योर रेडार टू एक्चुअली वॉच आउट फॉर? Sky Esports from day one has always been that grassroots, underdog development, I would say agency. It's not a tournament organizer for me. It was never a tournament organizer for me. Take it any game, let it be in the Valorant, Free Fire, Call of Duty Mobile, Real Cricket or this one. It has always been a base for, any team without any kind of identity to come and prove themselves on this, massive stage. And Nugget has done really good, play. They've played really good games in the last few matches. I happened to see a couple of them, and me and our analyst, we were talking about them as such. Uh, Not very into this thing, but yeah, I mean, there are a lot of teams that if I name a few, then we're going to have some issues. So I would refrain from doing that. But on the topic of Nugget, yes, that is one team that we have to look out for. वेल संतोष सर, आपसे पूछना चाहूंगा, 70 इंडिया की टॉप टीम्स में से आती है। आप अभी अपनी टीम के बारे में क्या फील कर रहे हैं एंड कैसी तैयारी है आपकी स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम के लिए? Well, we want to keep it very simple because we just came from BGIS. The idea is that the players are pretty much exhausted. Currently, nobody's in the boot camp. Everybody's playing from their home. But competitive-wise, the analysts and the coaches, they've been more or less discussing what are the rotations and the strategies that we're going to implement. So it could be a new rotations that we would be seeing today that we planned after looking at some of the changes the teams have made in the past. So basing on that, even we are also trying a new player today for the first time and to showcase what kind of adaptation the game is going to be. In coming to the team performance, yeah, we are currently happy with what the team is going through so far. We understand Sky Esports is always a very important tournament for us, and it is also a stepping stone for the upcoming tournaments and also for the Asian Games. So we want to make sure that we will give our 100% focus, and of course, match by match, we will discuss what we're gonna do next, and we will try to implement our strategies accordingly. Well, that is just amazing. And इसके साथ साथ मेरा जो अगला सवाल आपके लिए रहने वाला है संतोष सर, कि आई होप यू आर वेरी वेरी अवेयर। इनफैक्ट आई थिंक यू ऑल आर अवेयर कि स्काई स्पोर्ट्स हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड द रोड मैप फॉर 2022 एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स। हमारे खुद के आईपीस रहेंगे एंड इसी के साथ साथ देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक। सो संतोष सर, what do you think, what will be your expectations from your team, and how are you going to pull off those preparations to just go in and claim that trophy? So, like I always said, right? So the smaller the team is always better for me. So the idea we always do is we generally do a daily stand-up meeting, and I don't know how many people are aware, but we adapt a model called Scrum. The idea is we do have divide the day into pieces where the gaming time is separate and then preparation time is separate, and then we discuss what are the team strategies that we adopt. So in a way, you have a daily stand-up where routinely we check in and we see what we are going to do. And then after we have a preparation session, which we call it a planning session for ourselves. And during this planning phase, we just don't only discuss about our plans, but we would rather understand what the other teams are doing at the moment, right? We do have some of the analysts that would join from us from our Thailand team, so they could also analyze the gameplay of other teams, and basing on that, we prepare our strategies for the game. And coming to the massive prize pool, guys, I think you guys are killing it, right? Rock solid. And also congratulations on Crafton joining the board as well as an investor into Jet Synthesis. I think these are all good feats, and this is actually elevating the esports on a much larger scale, right? So
there is only one thing, the World Trophy. Whichever team that gets it to India, that's where I feel like we are matter in the world stage as well, right? Godlike did a fantastic performance during the PMGC, and we are sure, right? Whichever team that goes in, we are with them 100%. वेल दैट इज जस्ट अमेजिंग बट मैं आर्यमन सर से पूछना चाहूंगा आर्यमन सर एक ट्रॉफी मिसिंग है एनिग्मा के कैबिनेट में बीजीएमआई के अंदर व्हाट डू यू थिंक क्या इस टूर्नामेंट में वो ट्रॉफी आने वाली है आई थिंक आर्यमन सर की आवाज हमें नहीं आ पा रही है आर्यमन सर कैन यू चेक योर माइक Is that better? Can you hear me? या now? या वी कैन हियर यू नाउ Absolutely, as I said, the effort is immense. Everyone working very, very hard. As Santosh rightly pointed out, after BGIS, everyone's very tired, but they've gone back to the grind. So we're going to be putting our best foot forward and try and get that trophy home as the second trophy for this BGMI lineup. Well, that's amazing. Well, मैं वापस अन्ना के पास आना चाहूँगा ज़रूर. अन्ना, Velocity Gaming has a lot of trophies for themselves. What would the title of Grand Slam mean for your team? Like अभी सीधा वो Grand Finals में ही खेलने आने वाले हैं, and I'd just say कि Grand Finals में सीधा खेलने आना with all the homework getting done, what would be the it's just plain and simple कि overall ये trophy आपके लिए कितना important है, and that's it. ये बात मैंने टीम से भी बात किया था. इट इज लाइक यू हैव गिवन डायरेक्ट एंट्री इनटू फाइनल्स. थिंक दे आर थिंकिंग दैट यू आर अ डिजर्विंग टीम. नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू प्रूव टू रेस्ट ऑल द टीम्स that yes, you are a deserving team to be here in the grand finals. And coming to the trophy part, I've just given them one explanation. The name itself says it. It's a grand slam, so take it as a tennis match. And Nadal, what he has done is something that you have to replicate right now, and that is what you need to do. Well, just as Nadal does, never give up. I think VLT भी यहाँ पे बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाली. बट माया भी आपके पास आना चाहूंगा. यंग प्लेयर्स हैं, आप यंग 4 प्लेयर्स को लेके आते हैं, वो इतना अच्छा खेलते हैं. कुछ बताना चाहेंगे आप प्लेयर्स के बारे में हमें? well, जैसे अभी संतोष सर ने बताया स्पीरो की 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं दिन को. एक में प्लानिंग होता है, एक में प्रिपरेशन रहता है, साथ में परफॉर्मेंस पूरा एनालाइज किया जाता है. आई थिंक मैं अभी उतना तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज हमारे प्लेयर्स का दिन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है. आई थिंक हाफ ऑफ टाइम उनका एजुकेशन में जाता है. हमारे 3 प्लेयर्स के अभी फाइनल एग्जाम चल रहे हैं. अभी सेमीफाइनल्स के अंदर भी तीनों प्लेयर्स स्कूल गए, एग्जाम दिए, उसके बाद डायरेक्टली दे केम आउट देयर टू प्ले. एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली प्राउड कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ हम फाइनल्स में आए हैं. वेल, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आगे भी करते रहेंगे. अभी तो बहुत लंबा सफर है, अभी तो जर्नी जस्ट शुरू ही हुई है. बैलेंस करके चलना है. इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस, किस तरीके से हम अपना मैनेज करते हैं पढ़ाई को भी साथ में, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट. सिर्फ ई स्पोर्ट्स इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, बट फॉर द प्लेयर्स जो अभी 17 साल के 18 साल के एज के अभी बोर्ड एग्जाम पे चल रहे हैं, दोनों चीजें मैनेज करना मुश्किल है. बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी आर डूइंग गुड एज ऑफ नाउ. उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा. Well, for the final question, संतोष सर, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा. So, sir, what will this trophy mean for your team if they get it and if they don't? Well, Sky is always having a special place in our heart, right? So let me start like this, right? Our India journey started with Sky Esports Championship 3.0 as our runner-ups, and it has garnered a lot of attention, and we've showed ourselves that we are one of the top competing teams in India. Now, we always look at any Sky Sports Championship or any other tournament, whether it is Grand Slam or even 4.0 that would be coming this year. It is always having a special place in our hearts that we want to win this no matter what, right? So that was the attitude. Prince always says it. Sky Sports में करना पड़ेगा, right? So that's what something he always tells me. So for that very reason, if you win it, of course I'm happy for the team. Even if we don't win it, it's okay. At least I understand there is always a lesson to learn, and if there are something that we can take away, we will take that, whatever the mistakes that we have done. And since we are trying a new player, of course, if we don't win it, it's not a big problem for us. But winning is something that the team always strives for. If you lose, it's okay. We will just figure out what are the mistakes that we have done. We learn, we adapt, and we change our gameplay. Well, that was just amazing. Thank you, gentlemen, हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड लक फॉर द गेम्स. आज से ग्रैंड फाइनल शुरू है. कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से अब सभी का मंत्र रहने वाला है इस टूर्नामेंट के अंदर.
वेल एक सवाल हमें अभी अभी आया है हमारे कानों में, आपसे पूछना चाहूंगा कितने चिकन डिनर आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी टीम से? मैं अभी आपसे शुरू करते हैं। वेल वी आर एमिंग नॉट फॉर द चिकन। अभी 6 मैचेस हैं तो हमारा आज का टारगेट 80 पॉइंट्स का रहने वाला है। लेट्स सी। अभी कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है प्लेयर्स के ऊपर, पूरा एकदम फ्री छोड़ दिया कि जैसे खेलना है खेलो। इस बार कोई एडिशनल होमवर्क हमने नहीं किया। इट्स जस्ट दैट वी आर एमिंग फॉर 80 पॉइंट्स। वी गेट इट, वी आर मोर देन हैप्पी। इफ वी डोंट, वी गोना ट्राई अगेन टुमारो। वेल आर्यमन सर, आपका पहले दिन का क्या ख्याल है, कितने चिकन आ सकते हैं आज? I think the boys play every game trying their best to get that chicken dinner. That's the spirit, that's the mentality you have to go with. We try and take it one game at a time rather than thinking about the entire day. And then if every game goes well, obviously we're hoping to have, as Mayavi rightly said, 80 to 100 points would be great. वेल इसी के साथ साथ लेट्स अन्ना, आप भी बता दीजिए अपना पर्सपेक्टिव। हाउ मेनी चिकन्स आर यू प्लानिंग टू गेट? अभी मैं स्ट्रीम पे बोल दिया तो टीम टेंशन में आ जाएगा. But yes, we did have some target to get at least a couple of chickens and aim for that. Anywhere between 60 to 80 points is what we thought per day, and then just take it forward step by step on a daily basis. It's a long tournament. It's not just Okay, I believe this. Okay, it's back. All right. And उसके साथ साथ, well, Santosh sir, what about you? So generally, our planning. So our team is pretty much comfortable between 9 to 14 point range, right? So that's where our past experience suggests what the team does. So generally, we aim anywhere between 9 and to 14 points is the range per match that we want to contribute. And holistically, if you look at it, right, so it varies between around 60 points to 90 points. That's where we will look at. And in terms of chicken dinners, generally we want to focus where a strong map is, right? So generally we do pretty much good in Erangel and Miramar. Those are the matches we always focus for chicken dinners. And in Chanok, it is all about that kill hungry gameplay that would come down, right? Because it's a fast-paced map, so our boys would go for the kills. That's how we position our strategy for today. Well, that is going to be it. Thank you, gentlemen, for joining us. Good luck for the games. आज पहला दिन है, अभी बहुत लंबा सफर है, 7 दिन लगातार है, तो good luck for that. And let's see ट्रॉफी किसके पास जाती है इस टूर्नामेंट के बाद. Thank you, guys. Thank you. thank you.